नोड बी से बहुत सारे बीम्स मिलेंगे जिसमें से हमको पता चलनी चाहिए कि किसकी बीम की कितनी स्ट्रेंथ है, जो हमें एसएसबी के अंदर पीबीसीएस डीएमआरएस के थ्रू हमें वो पर्टिकुलर बीम का स्ट्रेंथ पता चलती है। जो वो पर्टिकुलर बीम का स्ट्रेंथ पता चलने के बाद वो आरएसआर पे डिकोड करने की कोशिश करती है, और ये एक्वायर करने के बाद ML1 सर्च के थ्रू जब यूवी एक्वायर करती है जी नोड बी से, पहले वो ये देखती है कि कौन सी बैंड है, उसकी RFCN क्या है, और SSB की कितने सब कैरियर स्पेसिंग है, 30 किलोहर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग है, और ये सक्सेस हुआ है, ये पर्टिकुलर SSB सक्सेसफुली डिकोड हुआ है। उसके बाद आती है अपना सब कैरियर ऑफसेट। इट मीन्स दैट अपना बेसिकली रिसोर्स ग्रिड पॉइंट ए से कितने ऑफसेट बाद एसएसबी मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे के एसएसबी लेस देन और इक्वल टू 23 मतलब इट कम्स अंडर सेल डिफाइनिंग पैरामीटर, बिकॉज सेल डिफाइनिंग मीन्स if any core set is being included in the in the SSB and core set, if they both are coinciding with each other, then it's called as cell defining one. If not, it's called as non cell defining one. And यहाँ पे मिब कंटेंट जो है वो ये बताती है कि सेल एसए की है या एनएसए की है। तो मिब की कंटेंट नीचे मिलेगा। तो बेसिकली अपने को एसएसबी से पीएसएस पता चलती है, एसएसएस पता चलती है, जो कि दोनों पीएसएस और एसएसएस डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है। एंड देन अब अपने को सिब1 की इंफॉर्मेशन और मिब की इंफॉर्मेशन पीबीसीएच के थ्रू पता चलती है। सिब1 इसलिए पीबीसीएच के अंदर इंक्लूड किया है क्योंकि 5G में एवरीथिंग इज डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ कोर सेट्स एंड search spaces. So these are configured once RRC reconfiguration is being done, but for SIB1 it comes before the whole attach process, before the whole attach process. So SIB1 को include करने के लिए हम PBCH के अंदर PDCCH common config SIB1, उसके अंदर हम सिर्फ कोर सेट 0 डिफाइन करते हैं, बाकी सब कोर सेट रिकॉन्फ़िगरेशन होने के बाद डिफाइन होती है, बट कोर सेट 0 is dedicatedly used only to decode SIB. उस SIB1 के अंदर हमको बाकी SIBs की इंफॉर्मेशन मिलेगा, और सेल बार्ड है अनबार्ड है, वो कोर सेट 0 के अंदर कौन से सर्च स्पेस में जाकर कौन से रिसोर्सेस यूज करके SIB1 की इंफॉर्मेशन डिकोड करनी है, ये सब हमें PDCCH कॉमन कॉन्फिग SIB1 के अंदर पता चलती है। यहाँ पे 180 जो है 180 is divided into two parts. It's converted into hexadecimal binary. After converting into binary, MIB is used to calculate core set, and MSB is used to calculate core set, and LSB is used to calculate search space. So here we are able to tell that downlink frequency is so and so, cell ID is 511, and N41 is basically an SSL. So the ERFCN which is coming over here, it's related to SSL. Like through ERFCN, we can come to know whether it's FTD cell or TTD cell. Here through this downlink frequency, we can be able to conclude whether this is an SA configured cell or NSA. Right. So from here, subcarrier SSB subcarrier offset, it means that overall resource grid from point A where the SSB is going to land, that is called as SSB subcarrier offset. Okay. Here 6 MSB of actually in MIB will be getting only out of 10 bits, only 6 bits will be included in MIB because it repeats after every 40 milliseconds. So we have for every 10 milliseconds it repeats, and then for every 40 milliseconds new MIB comes. So here there is a chance of decoding. Sorry, for example, MIB 80 है ना 5G में? MIB in common मतलब same subcarrier spacing is used for SSB, SIB1, message 2, message 4 for initial access.
cell is barred means UV doesn't go to camp on that cell. If cell is unbarred, it goes to fetch that particular cell. So how do we decode? See, from here 180 is converted into binary. MSB gives us core set information, and LSB gives us search space information. From 0 and M, we will be able to know what is the system frame number being used, and in that system frame number, in which slot we can fetch that particular search space information. So this this is basically indicates that one inside me, like this we'll be getting. Sometimes we'll be getting in this manner or else in this 180. If we decode properly, MSB is converted into index 11, search space is index 4. Okay. Go ahead. Then how does PDCCH successfully decodes? As SIP1 comes in DCI 10 for downlink, every common related information, common search space related information like SIR and TI, PR and TI, and RAR and TI, all related to common things where every UE has the liberty to access. Those all comes under DCI 10. DCI 10, after scrambling DCI 10, what is the information coming in DCI 10 PDCCH, that will be scrambled with SIR and TA. So after decoding that particular SIR and TA with that PDCCH properly, then we can tell it as decoding is successful for that particular SR and TA. So here this is called cell defining. SSB is included in core set. Inside core set 0, we will be able to fetch the PDSCH information once this PDCCH is successfully decoded with the SIRNTA, specified SIRNTA. So, SIRNTI, its a particular system slot is 11. For that particular system slot 11, the ERFCN, what is the modulation code used, and what number of receivers, 2 cross 2 MIMO, and its subcarrier numerology is 30 kilohertz, means the subcarrier spacing is 30 kilohertz, and physical cell ID is 10. Then MAC DCI information, it's to MAC DCI information, we will be able to know whether the particular cell is pruned or not pruned. Pruned means that is removed, not pruned means that is successful. So this MAC DCI information for this particular SIRNTA, what is the system frame number? It's 596 and slot number is 11. For 11 and system frame number 596 of 30 kilohertz subcarrier spacing, we will be checking this particular SIRNTA which we fetched over here is pass or fail. CRC is pass means PDCCH is successfully decoded. After successfully decoding of PDCCH, it goes for a check on PDSCH, what all the information is carried in that particular PDCCH. So whenever is subcarrier spacing common from MIB1, it tells whether it's 15 kilowatts or 30 kilowatts subcarrier spacing. One bit in DCI distinguish SIP1 and the other system related information in case they share the same search space. If DCI 10 is only used for SIP1 and other system related information, so one bit in DCI used to distinguish between SIP1 and other system related information. So transmit time interval is 160 milliseconds because it's 30 kilowatts of carrier spacing, and core set 1 is mandatory to be a subset of core set 0. Core set 1 can be used by random access, other system related information, or paging search space information. So when we go inside the SIP1 content, we are telling PDCCH common config SIP1. From this, we were able to know that here that information is being included. Inside that system, other system related information, paging search space, RS search space,
So everything is included in search space 1, core set ID 0. So from this, what is the system information, scheduling information, what is the periodicity of system information, and what is the window length of system information. So offset to point A is 28 in the sense from point A, resource grid bottom, where the SIP1 is going to land. That is told as 28, means after 28 RBs we can try for fetching PDCCH config SIP1, and offset to carrier is 0. This we'll discuss later. SIP1 IS includes cell access related parameters. One is scheduling information for other system information. One is cell frequency information, and another is uplink and downlink bandwidth part information, search space information, search spaces, and core set details for paging and random access. So this is the SIP1 information. In this, we have successfully SIP3, SIP4, SIP5, and its system window length is 160. Whenever we have core sets, there is an initial to do initial access. There is an initial bandwidth part available to do random access on all. So here for downlink common config, what is the downlink frequency it has to use, and where that particular BWP is available, and what is the offset. In SIP1 we'll be having PLMN information, tracking area code, RAN area code, and cell identity, and cell selection related parameters. Frequency is NR78 is the frequency band. So cell selection related parameters include what is the PLMN, what is the tracking area code, whether cell is barred or unbarred. So when it comes to frequency info downlink, offset to point A, it means frequency offset between the lowest subcarrier of the common resource block, it means point A, and overlapping subcarrier of SSB block PRB. It is represented in units of 15 kilohertz. Offset to carrier, frequency domain offset between offset to point A and offset usable and the offset usable subcarrier. It is represented in same unit as subcarrier spacing defined for this. एंड ये तो BWP इनिशियल BWP एक है जो करंट BWP bandwidth, but in terms of location and bandwidth. PDCCH common gives all the SIP1 related information. SI scheduling information, what all SIPs are being transmitted by Gnode B and what is the periodicity of that particular system information, and RACH related parameters. So one is downlink frequency. This we have to check. This I'm not getting much. This offset to point A, in the sense it's telling that after 28 RBs from common resource block, from the lowest resource block, there is a chance of fetching downlink BWP. So here for initial access, every time we'll be having an initial downlink BWP. Its location and bandwidth is 1099. It tells where the particular BWP is associated, and PDCCH common config setup means all the common related parameters will be included in this particular search spaces. So common search space list inside core set 0 ID 1 search space 1, and this is we are monitoring first symbol in that particular slot, and candidates available are 2 with aggregation level 4, and the formats being used are 00 and 10. 00 is used for uplink common configuration and 10 is used for downlink common configuration. So KSSB, whichever we discussed at the top, it's nothing but the frequency offset between the SSB and the overall resource grid in the number of
subcarriers. If it's greater than 23, it means SSB is not cell defining, means it's not included inside the core set. And the corresponding PDCCH config SIP1 gives the frequency location of the cell defining SSB. So here K0 is nothing but whenever a downlink PDCCH is being transmitted, after how many milliseconds there is a chance of getting, after how many milliseconds G-node V decodes PDSCH. This is the K0 value, and K1 is nothing but if we have transmitted any downlink data, after how many milliseconds there is a chance of ACK or NAC coming from the UE in uplink. And K2 is nothing but in uplink PUCCH I have sent something. When can I wait? After how many milliseconds it's being waiting? After how many milliseconds it can fetch that particular PUSCH data. So this is K0. And there is another uplink common BWP, initial BWP. Inside this, we'll be getting all the RACH related parameters. And SSB per RACH occasion and contention based preambles for SSB 4:8. 4 means 4 SSB for 1 RACH occasion. 8 means 8 preambles in each SSB. So here, if it's 8:1, if we give here 8:6. So SSB per RACH occasion means 8 indicates SSB to RACH occasion. Mapping is 8:1. 8 SSBs corresponds to 1 RACH occasion and 6 preambles corresponds to 1 SSB. So 6 8s are 48. We have 8 SSBs. So 6 8s are 48. Total 48 preambles of RACH occasion is being done. Particular example. In our case, it's a 4 and 8, 4 SSBs for 1 RACH occasion and 8 preambles for 1 SSB. So 8 4s are 36. And then group 32. is 8 4s are 32. 9 4s are 36. Here, all the contention based timer and everything is done. Then K2 values after PUCCH is done. After how many milliseconds PUSCH is being recorded. Then for TTD, there are two different patterns, pattern 1 and pattern 2. And these are all the UE respective parameters. In this, as SIP2 is included in SIP1 only, so we will be telling initial access and cell related, cell selection related parameters are included in SIP1. And SIP2 is nothing but our SIP3 in LTE. So it does the all cell reselection related one. SIP3 interfrequency information for cell reselection. SIP4 is for interfrequency information for cell reselection. Okay, go ahead. Then RACH After, information. after this, we'll be getting, like in usually after RRC request is sent, RRC setup comes. Inside RRC setup, we'll be getting SRB identity 1 being configured at the network. So here, what all the radio bearers been configured? One SRB identity 1 is configured. If RAR is properly sent, and if we get any RRC setup for our request, then SRB identity 1 is being configured. Then another scheduling request related configuration is being done inside initial downlink BWP, initial uplink BWP, and the inside this, what are all the PDSCH information for this particular PUSCH for initial uplink BWP, what are all the respective PUSCH configurations, and these are all tells us RRF related parameters. Here SRB1 is being configured, and here what are all the RLC bearers being configured.
And these all same as in LTE only. Then registration request is sent. So it even tells what's the registration type. UE indicates registration type is initial and follow on request is pending. UE has an PDN session request to send and it does not want network to release RRC after registration complete. UE provides mobile identity IE 5G QT to network. ये तुम बोलो एक बार. हम्म, हम्म, नीचे करो, ये हो गया ना रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. ये सब जो है ये सिक्योरिटी रिलेटेड पैरामीटर्स क्या हाँ कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी. है यूई. तो पहले जीनोड भी जो है अपना पूरा ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी की जनरेट करती है. पहले ऑथेंटिकेशन जनरेट करके यूई को भेजती है. यूई भी अपने एंड में ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स जनरेट करके जीनोड बी को भेजती है. जीनोड बी एएमएफ को भेजती है. तो दोनों के बीच ऑथेंटिकेशन होगा. उसके बाद सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक्सचेंज होंगे. ये 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 सब जो होने हुआ के है, बाद ये 0, ये 1, ये 2, ये सब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है. हाँ और ये हाँ ये आई ए 1, आई ए इंटीग्रिटी 2 एल्गोरिथम. इंटीग्रिटी एल्गोरिदम है. फिर क्या हाँ करेगा, और यूई अपना रिक्वेस्टेड एनएसएसआई इंक्लूड करेगा. हाँ और यहाँ पे ना ये रिक्वेस्टेड एनएसएसआई व्हाट इज द नेटवर्क स्लाइसिंग यूई वांट्स नेटवर्क टू बी कॉन्फ़िगर्ड. तो पहले रिक्वेस्ट करेगा यूई. यूई रिक्वेस्ट करने के बाद नेटवर्क पे पॉलिसीज के हिसाब से देखती है कि कौन सी नेटवर्क स्लाइसिस यूई चार्ज करिए. अपनी पॉलिसीज चार्ज करिए किस किस के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग यूई को प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो वो नेटवर्क स्लाइसिंग नेटवर्क को भेजने के बाद ना यूई बताती है नेटवर्क को कि मेरे को नेटवर्क स्लाइसिंग सो एनएसएसएआई कॉन्फ़िगर करो. तो जीनोड भी देखती है. अगर कुछ ना हो तो ये डिफॉल्ट एनएसएसएआई कॉन्फ़िगर करती है फॉर दैट पर्टिकुलर पीएलएमएन विथ व्हिच यूई इज अप्रोचिंग द नेटवर्क. उसके बाद ये वॉइस सेंट्रिक है या डेटा सेंट्रिक सपोर्ट है, इसका कुछ बताए थे. यू यूजेस सेटिंग नीचे हाँ वो. हाँ हाँ ये वॉइस सेंट्रिक है या डेटा सेंट्रिक. इफ इट्स 0 it means it's going for a VNR call. If 1 it's doing some downlink data. ये No, ये हाँ actually all information are voice centric or no, like IMS support or not, all comes in the UI capability informations. यहाँ पे अच्छा इतना ही ओके ओके. If it's a voice centric means it supports data plus VONR call. If it's हम्म, only data centric it supports only data related thing. VONR call can't be established. हम्म. ओके. फिर नास मैसेज कंटेनर एक आता है. नास मैसेज कंटेनर क्या होता है, परफॉर्म मोबिलिटी फ्रॉम S1 मोड टू N1 मोड. इसका मीनिंग ये है नास मैसेज कंटेनर. S1 मोड मतलब अपना S1, LTE. हाँ S1 मोड टू N1 मोड जो हैंड लाइक मूव होता है ना, लाइक अगर कवरेज नहीं हुआ 5G का. हाँ, हाँ तो वो LTE में वो उसका S1 मोड में वो स्विच होगा ना, तो इसके लिए हम्म. वो होता है नास मैसेज कंटेनर इंक्लूडिंग इक्वल टू 1 होता है इफ यूई परफॉर्म मोबिलिटी फ्रॉम S1 मोड टू N1 मोड. ओके ओके. ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में टाइप ऑफ आईएस और सिक्योरिटी रिलेटेड पैरामीटर्स इन्वॉल्व है. तो कंटेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ये आप ही बताओ. नहीं, क्या है ना, वो इनिशियल नास मैसेज रजिस्ट्रेशन और मतलब टाइप्स ऑफ आई, एक क्लियर टेक्स्ट होता है और एक नॉन क्लियर टेक्स्ट होता है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि व्हेन सिक्योरिटी कंटेक्स्ट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, तो ये क्लियर टेक्स्ट आई है. आफ्टर सिक्योरिटी इज एस्टेब्लिश्ड, वो नॉन क्लियर टेक्स्ट होता है. यहाँ पे एग्जांपल के साथ रहता है. ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आगे बताओ. यूई का फिर यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी में जीनोड भी यूई को पूछती है कि व्हाट आर ऑल द एनआर बैंड्स व्हिच यू सपोर्ट. तो यूई विथ रेस्पॉन्स टू इट यूई अपना इंफॉर्मेशन बताती है. यूई कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे ना जीनोड भी ये भी रिक्वेस्ट करती है कि कैपेबिलिटी रिक्वेस्ट में दीज आर ऑल द बैंड्स, इनमें से कौन से सपोर्ट करते हो.
फिर राइट। यूई इंफॉर्मेशन बताती है कि दीज आर ऑल द एनआर बैंड्स। ये पहले अपना प्रोफाइल्स बताती है, आरओएससी प्रोफाइल्स विच ऑल इट सपोर्ट्स फॉर पीडीसीपी, and then comes RLC related parameters, what all the modes it supports, AM mode, UM mode, and then MAC related parameters comes, what are all the DRX cycles, and then physical layer related parameters comes, in which bandwidth, which delay is type 2. Whenever if first UE tries for an initial access, it's done in initial BWP. Once UE has done all its registration and everything is been done, once the UE got properly attached, then particular dedicated BWP will get configured for that particular UE. Once that activity of dedicated BWP is done, if any default BWP is being configured at UE end, then it goes for a default BWP and rests over there. If not, it again goes for an initial BWP, which it assumes as a default BWP and stays over there. तो ये सारे फिजिकल लेयर पैरामीटर्स बताती है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये बताती है कि मैक्सिमम कितने ट्रांसमिशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक सीसी के अंदर ये कॉन्फ़िगर कर सकता है और कितने एक्टिव ट्रांसमिशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक बीडब्ल्यूपी के अंदर ये सपोर्ट करती है। सो ये बैंड 1 सपोर्ट करती है करके बोल रही है, उसके अंदर 30 किलोहर्ट्ज के सब कैरियर स्पेसिंग है बोल रही है, और बीम मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन बताती है, फिर कोड बुक रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताती है। तो ये पूरा एक एक बैंड के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से बैंड से सपोर्ट करती है, उसकी बैंडविड्थ क्लासेस क्या क्या सपोर्ट करती है, पूरा बैंड सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता इंफॉर्मेशन है। इसमें आती है। ये सब मिलने के बाद यूई का जो ऊपर भी है आईएमएस पैरामीटर है। हाँ, ये एक ओवर हीटिंग इंडेक्स सपोर्टेड है, आईएमएस पैरामीटर्स, इसमें ईपीएस फॉलबैक सपोर्टेड है। मतलब जब भी वीओएनआर की कॉल हम कर रहे हैं, अगर कवरेज कुछ वीक हुआ या वीओएनआर कॉल एस्टेब्लिश करने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फॉलबैक होके एलटी वीवो एलटी कॉल की तरह काम करती है। और ये सपोर्ट ना हो तो वो ईपीएस फॉलबैक नहीं होगी। अगर ये सपोर्टेड है देन ईपीएस फॉलबैक होके वो अपना काम करेगी। ये रिलीज 16 फीचर है। And another thing in UE capability, it must tell inactive state related information also. UE must tell to GNodeB whether inactive state is configured, whether it supports inactive state or not. Whether if UE doesn't support inactive state, then RRC release only comes after UE goes into idle mode. But if you want to keep UE in RRC inactive state request, then UE capability must be supported. Then the authentication between AMF and UE. After registration request, authentication will be done. Then security also will be done. Same as ciphering algorithm is LT. LT. Same as LT. Same as LT. Not much change. And after this all is done, registration accept. Registration accept doesn't go till UE. It's kept near GNodeB only. Once GNodeB and UE does its security things and authentication things, then GNodeB transfers to UE. So first GNodeB, registration accept message is kept near GNodeB only. Once security modes are established between UE and GNodeB, then इसी में बता देती हूँ. Once security is been established, network assigned 5G Gutti tracking area list to UE. गुट्टी इंफॉर्मेशन आता है ना, 5G गुट्टी इंफॉर्मेशन। सिमिलर टू एलटी जो भी है, सिमिलर टू एलटी। रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट यहाँ पे रहेगा, ये दोनों सिक्योरिटी एक्सचेंज करेंगे। ये दोनों के सिक्योरिटी होने के बाद जीनोड भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट के साथ यूई को रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजती है।
उसके बाद यूई रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके जिनोडबी को भेजती है। तो पहले ये रिकॉन्फ़िगरेशन जो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट के साथ वो भेजती है, कौन सी पीडीयू सेशन एक्टिवेट करनी है। तो पहले यूई को बताती है कि तुम एक्टिवेट करो, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, नेटवर्क एंड में मैं कॉन्फ़िगर करके रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो जिनोडबी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में SRv2 आइडेंटिटी बनाती है, फिर DRB भी बनाती है, फिर यूई को एक्टिवेट करना होता है। फिर यूई RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के थ्रू एक्टिवेशन भी हो गया करके जीनोडबी को भेजती है और जीनोडबी AMF को भेजती है। सो दिस इज द कंप्लीट अटैच फ्लो ऑफ Another thing, N26, what is N26? यहाँ पे supported नहीं है, वो एक है ना? हाँ, N26 is an inter-core network interface between AMF and MME in order to enable interworking between the 5G core and EPC. So this example we can tell like EPS fallback. और जब भी EPS fallback. सी और यहाँ एक पे हाँ, in N26 interface between AMF and 5G core and MME and EPC is used to enable seamless session continuity for inter-system handover, which will be critical for voice services. Especially this comes up for voice services. Because in voice services, muting is not allowed. More latency is also not allowed. So to have a seamless call, there is an internetworking between the core of 5G and 4G. another thing, T3512 timer. T35 Then timer. periodic registration procedure. I feel It is this for is periodic registration. It is similar to IMS expiry header. IMS Like expiry header. expiry header, Explain like that. is it in a regular interval, like it need to be sent the periodic register. So like how IMS, it is sending the periodic register in a certain interval, depends upon the expiry timer. Similarly, it is also giving the registration request periodically. So if it is there, then it is supported, it means. Okay. Then go down. 1 second. See, RRC inactive state. This is supported only when UE supports it. So usually in UE capability information, we will be asking for see here in UE capability information, it must tell that inactive state is supported or not. So instead of RRC release, we will be getting RRC resume request and RRC resume complete. It's nothing but UE and Zenode connection is lost, but the core network connection still exists. So whenever UE wakes up, it goes for a check, does it, and comes back. Yes. So in RRC resume, here also it tells what are the SRB identity it has, what is the DRB identity it has, RLC related supportability, and the special cell config. Whenever we are doing SA, it's called a special cell config. Okay. So these are all the parameters which are included in resume. First, UE sends an RRC resume request to GNodeB. GNodeB does RRC resume. Then UE sends RRC resume complete, telling that this is the PLMN identity which I have selected. If still after RRC resume complete, if UE is not doing any activity after so much time, then it goes to RRC release mode. So here we can see till reconfiguration complete. Till here now we have done all our attached process. Then RRC release has been done. Suppose for example, if any paging came up, then UE in that particular paging for that particular location and the particular paging frame, if it fetches any information, then UE wakes up, does it works and comes out. Otherwise, again, what UE does is that it sends an resume request to
I mean GNodeB sends to, sorry, UE sends to GNodeB, then RRC setup where resume comes from GNodeB and then resume complete is done. Okay. ये इसको ना अच्छे से बतानी चाहिए थी. See here the indication comes here. See if UE is sending request. This is coming to GNodeB means UE is sending the request. Here GNodeB is sending resume. Okay, ठीक है. फिर UE बताती है कि thank you as in resume complete. Afterwards it waits. If nothing is come up, it gets released. So till UE capability doesn't support inactive state, this can't be done. Correct. चलो ठीक है, थैंक यू.